Hello students, welcome to my channel. In this video, we will going to start with chapter 2 of class 8, chapter Microorganism, Friends and Foe. So let's start. The important topics of this chapter are introduction to microbes, microbes and humans, harmful microbes, friendly microbes, food preservation, and many more. So let's begin with the introduction to microbes. So we begin with introduction to microbes. Now the first question arrives. What are microbes? What are microorganisms? Microorganism होते क्या है? See, microorganisms are those organisms that are not microorganisms वो organisms होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं. Microorganisms are those organisms that are visible under a microscope. हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी नेक डाइट से नहीं देख सकते. हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं. नाउ द पॉइंट कम दैट वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लिव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते किधर है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं. नाउ लेट्स बिगिन. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कितने टाइप के हैं? ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं. फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ इज वायरस. सो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे.
First, we will study about bacteria. The very first thing about bacteria is that it is single celled. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे सिंगल सेल्ड होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर. बैक्टीरिया आर द सिंगल सेल्ड organism, which means unicellular. Second point about bacteria is that बैक्टीरिया सिंगल भी मिल सकता है, कॉलोनीज में भी मिल सकता है और ग्रुप्स में भी मिल सकता है. तो बैक्टीरिया कैन बी फाउंड सिंगल or can be found in colonies or we can say group. Third point about bacteria is that बैक्टीरिया स्फेरिकल में भी हो सकते हैं शेप में, बैक्टीरिया रोड शेप भी हो सकते हैं, fourth thing about bacteria is example. The example of bacteria is Rhodobacter, and E. coli. Now we will study about fungi. The very first point about fungi is that in fungi, chlorophyll is absent. Chlorophyll is absent. Fungi are generally sporophyte or parasite. Fungi are generally sporophytic or parasite. Means जो फंजाई है वो डेड एंड डिके मैटर्स को भी खाते हैं, प्लस किसी होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं. स्पेरोफिटिक का मीन्स होता है ईटिंग डेड एंड डिके मैटर, एंड पैरासिटिक का मीन्स होता है लिविंग इन अ होस्ट. Now, another point about fungi is the examples. The examples of fungi are yeast, mushroom, and mold. So here we talk about fungi. Now we talk about protozoa, which is another type of microorganism. The very first point about protozoa is that, first of all, it is heterotropic.
Second point, mo- protozoa are mostly aquatic. Third point are the examples of protozoa, which is amoeba and paramecium. Now we will talk about algae. The very first point about algae is the shape of algae are colonical, colonial, or filamentous. Algae are mostly aquatic. Examples of algae are Spirogyra and Volvox. Now we talk about virus. Now we will talk about virus, which is another type of microorganism. The very first point about viruses are they lie on borderline of living and non-living. The examples of viruses are influenza, chickenpox. Now in next class we will study about how microbes are friendly and how they are dangerous for us. Like this video, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you.